जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल। दिस इज 234th एपिसोड ऑफ डेली लाइफ मार्केट एनालिसिस. So guys, first of all, let us see what is happening in global markets. Then we will see what happened in Nifty and Bank Nifty today, and then we will take some stock queries. So as of now, global markets are slightly negative. US markets are trading almost 0.5% down. Even European markets are trading 0.5% down. But SGX Nifty is comfortably trading about 12,930. So global market से कुछ खास अभी update नहीं है. As of now, there are no cues as such from global market. So let us quickly discuss Nifty. So आज क्या हुआ Nifty में? Let us see. Today बहुत ही शानदार तरीके से मॉब लेवल ने वर्क किया है and 12,800, 12,820. This was the mob level given by me yesterday. So we have seen quite a bit recovery in Nifty from the mob level. तो इस एरिया से लगभग यहाँ से एक अच्छी खासी एक अप मूव देखने को मिली एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसको भी क्रॉस करेगा एंड मार्केट शुड हैव गॉन लिटिल हायर, बट नेवरदलेस निफ्टी वाज अंडर परफॉर्मिंग एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी. So this up move should have been taken in Telegram group. I had expressed morning itself that I am expecting a move from downward and then upward like this. So Nifty में काफ़ी decent परफॉर्मेंस रहा है आज. अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मॉर्निंग से ऑलमोस्ट 400 to 500 पॉइंट्स की अपमूव देखने को मिली थी. सो बैंक निफ्टी में दिस वाज द लेवल दैट आई हैड गिवन यस्टरडे. माउरा ट्रेडिंग का हाई जो था 28,700, दिस वाज द trend deciding level. Above this we were expecting 29,200 as target. ये लेवल मैं आपको लास्ट वीक भी मैंने दिया था, अभी कल भी मैंने दिया था. So this was the level. You can see, the moment it tested this level, very nice bullish engulfing candle, and then started to consolidate. A bit of a fake selling which came over here, and then there was no looking back all the way towards 29,200. So this was a very good trade that we shared in the Telegram group with students also, as well as morning updates were also given. So let us see how are Nifty and Bank Nifty placed after today's charts, today's update. Okay, so interesting enough, let us first see the daily chart of Nifty. So if you can see, we have consecutive two black candles. If we can ignore this one because of our trading, but we have consecutive two black candles. Now आज significance किस लेवल का था? देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में 12,800 का सिग्निफिकेंस था. कैसे 12,800? we are talking about this level. So this level 12,800, this has been the trend line resistance. जैसा मैंने आपको थोड़ी दिन पहले बताया था दोस्तों कि मार्केट जो है या तो अंडरशूट करेगा या डेफिनेटली ओवरशूट करेगा बिफोर रिवर्सिंग. इट विल नॉट रिवर्स फ्रॉम हियर like last time, right? And this logic, this anticipation has worked, and market today it retested, it opened gap up above this 12,800 mark, and then it came down to retest, took support, and then it went higher. So that is why I had said in morning to my students that expect some down move like this towards 12,800, and then up move towards 12,920 and all those levels. So that was pretty easy to gauge and trade. Now, interesting enough, today we have formed a kind of a bearish hammer, or whatever candlestick pattern you say. As per me, it's a bearish hammer, not the bearish pin bar, but a bearish hammer. So what does it mean? See, it means that tomorrow there will be a range expansion. Number one, tomorrow, if markets open gap up till they are trading above this high of say 12,938, then markets will be bullish, or else it will come down. Also, we can see a big selling candle of 3 to 400 points anytime now. So it can happen tomorrow, or it can happen in next 2 days. Anytime soon, we are going to see a candle like this, a big selling candle like this, which is essentially a bearish engulfing in nature.
So this is what I am anticipating. Most probably we can get it tomorrow or maybe day after tomorrow. But within next like two sessions, anytime we are expecting a big selling candle like this. Okay. So how will you play? Because there is a strong support at 12,800 and there is a strong resistance at 13,000. So it's a 200 points band. So let us see what is the trading plan for tomorrow. See, the trading plan for tomorrow is very clear. Today it took resistance somewhere near this level. So what we are going to do is we are going to consider this as the trend deciding level for tomorrow. Fine. So for tomorrow, the make or break level, the mob level will be 12,880. 12,880, which is the morning high before this fall and the second half up move हाई ओके सो 12,880 इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे पहला टारगेट होगा इसको ब्रेक करना सो वी विल लुक towards 12,900 and I would say 67 and second target will be 13,020 so we are expecting this and this below 12,880 if we do not cross this then again we will come down and probably we should go towards 12,767 and after visiting this 12,767 it should ideally come back again and try to retest 12,823 which is this level. Okay, it should come back and it should try to break above this. Second time if it goes down and if it breaks this then complete fall towards 12,710 will happen. Now this price action which I just now talked about, if this happens it also means that on the longer time frame your trend line resistance which we have been talking about, okay, that will be broken again like this. So that will create a liquidation sell-off. That will create some sort of sell-off and then market can go all the way towards 12,620 which is also our first support on weekly. First support on weekly. So yesterday night video if you watch, I have given the levels on weekly basis and everyday basis जो है हम मिलते हैं और डिस्कस करते हैं ठीक है so levels तो आ गए now let us talk about scenarios so scenario number 1 as per SGX if we open gap up now gap up and gap down they are of two types gap up and gap down they are of two types type 1 where you gap up or you gap down above the day above the high or the low of today okay so gap up and gap down above high and below today's low okay now such days can often tend to be a trend day such days can often tend to be a trend day so for tomorrow if we open above the mob level and above the today's high then all these targets will be completed and a selling pressure will come from 13,020 that will not be the selling per se it will be more of profit booking and it will come back and retest the 880 mark the 880 mark so ये एक scenario है scenario number 2 if we open gap up above the mob level but under the today's high then most likely we will visit 12,967 just to pierce through today's high and most likely we should start to fall and in that case first target again 880 and if 880 is taken out I think 880 will be taken out in that scenario then you will head all the way towards 767 so that is scenario number 2 scenario number 3 flat opening then go with the levels scenario number 4 if there is a gap down opening but in this particular range then focus should be on 12,767 यानी अगर गैप डाउन होता है यहाँ कहीं पे तो जब तक ये बॉटम इंटैक्ट है
ये मार्केट 50-50 चांस रहेगा यहाँ जाने का या यहाँ जाने का. So in that case, you really need to pay attention what market does at 12,767, which is today's low. There is a small partial gap also which is left. हो सकता है market to trap bulls on higher side. It comes down, and from here it bounces back strongly and goes on the upside. So ये situation हो सकती है. ठीक है. So I've explained all the possible scenarios, and I'm sure ऐसा ही होगा. So that's all from my side on Nifty. Let us go and see Bank Nifty. So Bank Nifty, great day. First of all, a superb trading day for Bank Nifty, and absolutely perfect level जो है मैंने दिया था 28,700 के आसपास, बहुत ही शानदार लेवल था. And now we are at 29,200. Okay. So what is the plan? What is the plan now? See, let us see the bigger picture first. So what is the bigger picture? On daily chart, we are still anticipating the up move to go towards 29,700. But as I say, this is the overextended territory. So it may culminate at any point. Since we have made a new wave high, it qualifies that it can start to reverse anytime in this band. Okay, so it may not necessarily go towards 12,700, sorry, 29,700, but it may terminate anywhere in this zone of 29,200 to 29,700. So इस zone में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. Okay, this is where the scene of crime is, and we are at a danger territory. Overall, a reversal is very much expected from in this zone towards all the way towards 26,000, say 500 and all those levels positionally. Now let us talk about tomorrow. What may happen tomorrow? So for tomorrow, let me open the intraday chart. So for tomorrow, uh, as per today's intraday activity, the trend deciding level is 29,050. 29,050. So we are here. So this is the level that should decide the trend. So 29,050, 29,100, 50 points here and there. So pretty much at this level. First target on the upside will be 29,533, and second target will be 29,720. So levels are very clear. On the downside below this, then we are expecting a revisit towards 28,800, and then a complete gap filling over here, which is 28,500. So levels तो काफी simple है, but what about scenario? See, scenario number one, if there is a gap up opening, then don't try to fade it. Okay, don't try to fade it, because there is a logical target, pending target of 29,700. So maybe it goes towards this, or maybe 29, say 550. It should reverse somewhere from this or this. So if it goes towards 29,550, you can look to short. Hardly there is a stop loss of 150 points. So over there you can look to short. You can fade. Target will be 29.50. Okay. Now if there is a flat opening, then go as per the levels. If there is a gap down opening below the mob level, then till I think 28,800, till this level is not broken, it will be undecisive. It will be undecisive, and it will try to toss around. But in due course of time, suppose you see that it is hitting the mob level and not crossing, then just play by the levels. Since it is below mob level, you can go for short. Keep the swing high as a stop loss and the downside as target. So that's all for Bank Nifty. As I have stated, very soon we are going to see a big wide range candle in markets. So that's all from my side on Nifty and Bank Nifty. On commodities, nothing much to add. जो मैंने बताया था कल वही चीज हो रहा है. So nothing new is there on commodities.
Natural gas is at 200 level, so we can create a long trade over here. Just make sure that if it is not crossing about 205 before closing, then it will be very risky to carry because there is no support below this. So natural gas has come to a good level. You can either take a aggressive long over here or just wait for tomorrow. That will be better. But if you take long today, then make sure that till it is not closing above 205, do not carry it. It can be dangerous. So natural gas ये हो चुका है. Crude oil pretty much same उसी रेंज में है, around 3000 लेवल पे बाय करना है and 3200 पे सेल करना है. Copper and nickel में there is no update. There is a new analysis for copper and nickel and zinc, but I will share it later. As of now there is no trade. गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी इंटरेस्टिंग. गोल्ड में मैंने शॉर्ट ट्रेड अभी दिया था स्टूडेंट्स ग्रुप में. सो गोल्ड ट्रेड इज वर्किंग वेरी नाइस. 51,000 पे शॉर्ट करना था, स्टॉप लॉस था 51,300 एंड टारगेट वाज 50,300. So almost 1:2 risk reward ratio. I think right now it is already 300 points in profit. Silver में भी short trade था, but it started to fall down before coming at a good shorting level. So ओवरऑल गोल्ड सिल्वर में फ्रेश अपडेट ये है दोस्तों कि सिल्वर एज यू कैन सी जब तक ये 64,400 क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग pressure is there. So you can say it's in a range of 64,400 to 61,000. So this is the range that silver is looking to trade. So I'm looking at this box, okay. So let us see how things shape up in silver. Overall, you know what is my view. Overall, it's a buy on dip counter. So we will wait for deeper levels to come and then we will buy. ये हो गया सिल्वर पे क्विक अपडेट. गोल्ड में as I said, big buying level is 49,500 to 50,000. That is the accumulation level. Today we have shorted. So if we see overall why I have shorted is because yesterday this up move, okay, generally it comes back again. So you can see how this daily candle has formed. So it will again try to revisit till here. So at least this 50,332 this level will come. ठीक है. So ये अपडेट है. ओवरऑल गोल्ड में नीचे मिलेगा, बाय करेंगे. That view I have expressed in every session. Fine. So gold and silver done. Chaliye, let us start with few stocks. Before going towards stocks, let me just give some update about currency. Okay, see, in currency what we have to do first. What is the okay, so where are the currencies? See, USD INR. What is the range? See, very simple. Okay, we are looking at a range of you can say 75 to 73.75. so 1 rupee 25 paise. So USDINR में कोई ट्रेड नहीं है. ओके, कोई ट्रेड नहीं है. ऊपर से आप शॉर्ट कर सकते हो बट इतना कुछ मजा नहीं आएगा, बहुत छोटा रेंज है. एंड सो USDINR I will ignore. Now let us focus on the cross currency. क्रॉस एफएक्स. तो क्रॉस एफएक्स में पहला है यूरो आईएनआर. सी यूरो आईएनआर में क्या करना है? यूरो आईएनआर में आई एम एक्सपेक्टिंग टू शॉर्ट. सो प्रॉब्ली यू कैन शॉर्ट 88.5. प्रॉब्ली यू कैन शॉर्ट फ्रॉम 88.5 टू 89. ये 50 पैसे में जो है इसको हम शॉर्ट करेंगे. टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट रखेंगे लगभग 87 के आसपास. ओके, सो ये एक 1.5 रुपए का यहाँ पे ये एक अच्छा ट्रेड मिलेगा. तीसरा है ब्रिटिश पाउंड. सो GBP INR में क्या करना है? कल इसमें अगर 99 मिलेगा तो इसको शॉर्ट करेंगे. मोस्टली कल मिल जाएगा. यू कैन शॉर्ट एनीवेयर 98.7 से लेके 99.2. सो लुक टू शॉर्ट समवेयर नियर दिस. But be careful in GBP INR because there is a Brexit related news, so that will give lot of spike. But overall I feel 99 के आसपास से ये resist करेगा and all the way we should expect at least like 97
97.5, 1.5 रुपया मिनिमम है. इट शुड गो टुवर्ड्स 97 ऑल्सो. सो 100 to 200 बिप्स इसमें एक फॉल आएगा. लास्ट है JPY INR. JPY INR, so this is quite good. इसमें जो है you can look to short 71.5. इसमें शॉर्ट कर दो, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है. एंड एक्सपेक्ट करिए 70.5, 1 रुपी, 1.5 रुपी का इसमें बेट है. ठीक है. सो दीज आर द लेवल्स विल नॉट चेंज. एंड पोजीशन साइजिंग अपने हिसाब से, एंड स्टॉप लॉस भी अपने हिसाब से सुटेबल. 50-50 पैसे का स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट आप लगा सकते हैं. सो दैट्स ऑल ऑन करेंसी. ओके, all right, चलिए let us see some stocks. Okay guys, before I proceed, just a heads up कि next जो training है that is scheduled on November 28th and 29th. Anybody who is interested, you can WhatsApp and get registered yourself. Once you register, you will be added in our Telegram group for a period of 3 months, and all the topics and details, everything is put up. So if you are interested, you can WhatsApp and join. All right, so what is this stock that we have to take? Bharti Airtel and Bajaj Finance. Bharti Airtel and Bajaj Finance. Bajaj Finance is bullish. Okay, Bajaj Finance is bullish. Let me. Okay, see, first I will take Maruti. Let me start with Maruti. क्विक अपडेट करेंगे आज. सी मारुति काफी आज सुपर स्टॉक था. इनफैक्ट आज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग साइड में मारुति वाज एब्सोल्युटली बेस्ट. व्हाई? नंबर 1, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट. नंबर 2, फॉल्स ब्रेकडाउन किया था. नंबर 3, गैप अप ओपनिंग है. सो एब्सोल्युटली परफेक्ट है. सारा चीज में बहुत ही अच्छा था. नाउ मारुति में एक्सपेक्ट कीजिए, यू कैन एक्सपेक्ट 7151. 7151 जो है ये इतना मिनिमम ये जाना चाहिए. सो दिस इज वेयर द कंजर्वेटिव टारगेट इज. स्टॉप लॉस जो है ये आपका रिसेंट बॉटम है विच इज नियर 6800. सो होल्डिंग दिस 6800 एक्सपेक्ट करिए 7151, एंड it can also shoot towards 7300. So bullish view hai. Try to book out if you get profits. ठीक है. सो ये हो गया आपका मारुति. MSTC. Okay, see MSTC I think बने रही है अभी. 144, 140 is a good level right now. Sit tight, hold tight. I think 200 should be done. Torrent Power, right? Torrent Power. हीरो मोटोकॉप, MGL, भारती एयरटेल. सी भारती एयरटेल ऑलरेडी बुलिश है. भारती एयरटेल में बता चुका हूँ कि 492 वगैरह का लेवल जो है आएगा. आई थिंक इट इज ऑलरेडी कम. सी टॉरेंट पावर जो है इसमें होल्डिंग 300. आई थिंक 315 शुड कम. So torrent power, very good support over here, 300, and 315 should come. So 315 के आसपास जो है try to book profits. हाफ वे में प्रॉफिट बुक करना, पूरा मत एम करना. So 315, 300 is the last stop loss for torrent. 300 is the last stop loss for torrent power. Correct? Torrent power. Yeah. MGL. गैलेक्सी. ओके, गैलेक्सी मारुति हो चुका है. MSTC हो चुका, बाटा इंडिया. ओके फाइन. सी MGL में आज एक अच्छा रिवर्सल है, बट ओके फाइन. सो स्टॉक इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू राइज अबव. इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की पूरी कोशिश में है. सी आई वुड से ठीक है, प्राइस एक्शन ठीक है, प्रोफाइल भी ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू, आई थिंक यू आर ऑलरेडी लॉन्ग इन MGL. सो इफ यू आर लॉन्ग, अब इसको होल्ड कर सकते हो दोस्त. 845 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो. टारगेट है 910 का. 910 का फोकस कीजिए स्टॉप लॉस पे, टारगेट पे नहीं. स्टॉप लॉस जो है ये आपका है 845, 850 के आसपास. 845, 850 टारगेट है. 910, 910. ओके. MOIL, मोइल.
MOIL मोइल, soon there will be turmoil। 126 का स्टॉक है, देखो 141 जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि स्टॉक में लेट मूवर स्टॉक है। सो इफ यू आर अ लॉन्ग ट्रेडर काइंडली बुक आउट योर प्रॉफिट्स। मेरे ख्याल से स्टॉक जब तक 120 सेफ है, स्टॉक एक स्पाइक देगा 136 की, एक स्पाइक देगा 136 की। ओके, नो एवरेजिंग, नो पिरामिडिंग, ये सब काम अभी नहीं करना है। इट इज एट नॉट दिस स्टेज ऑफ मार्केट। जो माल है उसको खाली करने का देखो, डू नॉट ट्राई टू ऐड। दिस इज द टाइम टू एग्जिट फ्रॉम मार्केट। हीरो मोटोकॉप, हीरो मोटोकॉप ओके, हीरो मोटोकॉप देखो 3034 पे है। ठीक है, आज इसमें एक सेलिंग करने की कोशिश की गई, ऑब्वियस लेवल से सेलिंग हुई है। Nevertheless, I think 2986 is the support level. You can see highest volume is also on this chart at 28 8, yeah, 295, 295। ओके, सी इसमें हीरो मोटोकॉप में आप एक चीज समझिए कि इसका जो बेस्ट सपोर्ट है इट इज एट से 2950 से लेके 2900। ठीक है, ये बेस्ट सपोर्ट है एंड यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम है। आई थिंक इट शुड बाउंस, आई थिंक इट शुड बाउंस बैक। बट दोस्त अगली बार प्रॉफिट मिले तो निकल लेना। ओके फाइन, सो होल्डिंग दिस आई थिंक इट शुड बाउंस टुवर्ड्स 3200। सो दैट्स ऑल ऑन हीरो मोटोकॉप। आज थोड़ा मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। पीडी लाइट दोस्तों, वीडियो पे लाइक अगर नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ओके, पीडी लाइट सी 1561 की प्राइस है एज ऑफ नाउ। आई थिंक पीडी लाइट में एक लास्ट अप मूव आ सकता है, but do not chase, lot of baggage creation is going on and the support is not that strong to hold this type of a baggage। So nevertheless इसमें एक अप मूव आना चाहिए, बट लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका ये कैंडल का बॉटम। इट इज लुकिंग लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न एज वेल। सो आई थिंक टिल टिल दिस लेवल इज होल्डिंग से 1540, 1540 जब तक इसमें सेफ है। आई थिंक वन मोर अप मूव विल कम टुवर्ड्स से 1620। ओके, 1620, बट एज आई एम सेइंग, try to be careful at this stage of market, especially in F&O। भारती एयरटेल, भारती has taken resistance at 495। सी भारती में पहले तो शानदार अप मूव के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, जिसने भी अप मूव प्ले किया है, बहुत ही अमेजिंग ये एनालिसिस थी। सो नाउ what is happening with Bharti? See, whenever you see this type of a, let me open this chart। सी जब भी अगर आपको किसी चार्ट पे इस टाइप का कोई भी कैंडल मिले, ओके, नॉट नेसेसरी लाइक दिस टाइप बट अ वाइड रेंज कैंडल, अ वाइड रेंज कैंडल, then it's a god given opportunity। Why it's a god given opportunity? It's a god given opportunity because these big candles are created, number one, by operators, and what happens due to these big candles? Retailers are trapped, retailers are trapped। ठीक है, see in small candles retailer enter, and in big candles they are trapped। So now, why I'm saying this? I'm saying this is because you see we are above the high of this candle. Earlier, it went below the bottom of this candle, closed like this, and then boom. Again, it came back, and then one more boom. So this boom is now over. So what we will do is we will pay attention in this band of say 495 to 500। It is too early to say that the reversal is there. Why? Because underneath you have the 200 DMA, you have the 50 EMA, and all these things are there। So because it's a mesh of moving averages underneath, they will try to provide their own support। सो इन शॉर्ट हम इस बैंड को थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे और
उसके बाद ही यहाँ पे शॉर्ट का एक ट्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ा और स्कोप है इसको, अभी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आने में इसको 2-4 दिन का स्कोप है, एंड लेट अस सी। सो मौका है, बट द कंफर्मेशन इज लैकिंग। ठीक है, सो लेट अस सी। ऑलराइट, ITC, ITC, ITC. Okay, let me take ITC. यस, हीरो मोटोकॉर्प जैसे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेड भी हमने दिए थे, करेक्ट। बीपीसीएल एक बार चेक करता हूँ मैं दोस्तों। आईटीसी अगेन, somehow it will try to crawl towards 194, 192 पे हेवी रेजिस्टेंस है, तो आईटीसी में अगर आप लॉन्ग हैं सो प्लीज बी केयरफुल। you know it every time, see, it starts to crash from the 200-day moving average, very very simple. Okay, so 192 पे है, and already it is showing some exhaustion, so be careful अगर आप ITC में long है तो। that's all I will say at this stage. MGL I have already taken. MGL I already explained. Yeah, MGL I have explained. 845 is the support, and soon you will see it trading near 910, 930. Reliance Industries. See, Reliance Industries, last time also I said कि 2100 से 1965 जाएगा, फिर उसके बाद 1965 होल्ड करके वापस से ये ऊपर आएगा। If you remember last week, every move in Reliance is absolutely correct. Every move. Now, when it was here, I said 2100 से 1965 जाएगा. When it came here, if you recall, if you check the video of this 12th November, by just looking at this little candle, I said next day अगर ये ऊपर खुलता है तो इसमें लॉन्ग करो, ये वापस से 2100 जाएगा। Okay, now see what is there in Reliance. In Reliance again the same thing, holding 1950. Once again it will go back towards 2100, probably towards 2152. Okay, so Reliance में इस तरीके से वापस से एक अप मूव यहाँ तक होगी, यहाँ तक एक अप मूव होने वाली है। It's making more of a triangle in nature. Okay, so this was 1, this was 2, this is 3, this is 4, and probably from here we will get the 1800 mark also. So let us see. We should not anticipate all the moves as of now. The objective move is holding 1950. We should see 2150. Once we complete 2150, then upon weakness we will look to short for 1800 mark in this particular fashion, thereby completing the first round of selling, or you can say a good correction. ठीक है, so Reliance is done. So if you get any down move, 1950 is your reference level, you can look to go long. BEL, next stock है BEL. I'll take only one stock query per person, so please do not ask multiple queries. 96 and half. Okay, see, BEL is facing resistance near the 100 mark. मेरे ख्याल से काफी डिफिकल्ट है इस स्टॉक को इस वक्त ऊपर जाना। मेरे ख्याल से इफ यू आर होल्डिंग लॉन्ग, ट्राई टू एग्जिट। एशियन पेंट्स ओके, 2189 पे ट्रेड कर रहा है एशियन पेंट में एक अप मूव आएगा। आई थिंक मोस्ट लाइकली शुड कम टुमारो ओनली, बट दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ एशियन पेंट। ओके, सो इट्स ट्रेडिंग इन दिस चैनल, सो वी हैव ब्रोकन आउट ऑफ दिस consolidation, and this is a operator candle. So tomorrow holding this 2150, you can go long. This is your last stop loss. So if we see a move like this, buy करिए। 2150 के नीचे का स्टॉप लॉस या 2150 भी रख सकते हैं, and then one more up move should come towards 2280 की तरफ एक अप मूव आना चाहिए। याद रखिए,
एशियन पेंट में अब बहुत ज़्यादा ये रैली हो चुका है. इट्स बेटर टू एग्जिट लॉन्ग्स इन एशियन पेंट. अगर ये एक लास्ट ट्रेड सक्सेसफुल हो गया देन आई थिंक इट विल बी बेस्ट कि आप एशियन पेंट से निकल जाइए. ठीक है. सो ये हो जाएगा. ये हो गया आपका एशियन पेंट. लूपिन. ओके, लेट मी check lupin. Lupin. Okay, interesting. 887. 887. Okay, see lupin. As of now, there is a risky, aggressive long trade which is to buy near. You can say uh, 860. Buy near 860. Stop loss will be 840. Target will be 952. Target will be 952. So what is the logic over here? See, this is a big candle sell off just underneath the previous swing bottom. The next candle is bought. It makes inside day pattern. First attempt to break out, it fails. Two little chunkies over here. Second attempt to sell this stock, but the moving average which is coming over here will provide the support, and that level is 860. So that is why buy at 860. 840 is the previous bottom, I think. So this will be your stop loss. Third attempt, sellers will be defeated very badly, and that is why this moving average which is coming from the top should be the target, that is 952. Correct. So I have explained you, I have given the trade idea with target, stop loss, as well as the technical discussion of why I am saying that. Okay, so Lupin is done. Next trader Pfizer. See, Pfizer I have already said, yeah. Do not ask about long term things. Pfizer में जो target दे चुका हूँ मैं, वो target intact है. Okay, 4950 पे stock है, इसमें एक sell off हुई है after that news. But as I've said, again it will go back. It will go back towards 6800 and all those things. You just have to hold for 5-6 months. That's it. It's a monthly chart, and based on monthly chart I'm seeing. फाइन. सो फाइजर आपको होल्ड करना पड़ेगा. अगर इसमें गिरावट कंटिन्यू होती भी है तो 4500 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा. 4500 से नीचे नहीं जाएगा. ठीक है. सो 4500 आप इसमें मार्जिन पकड़ के रखिए. बट ओवरऑल वेरी 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 हाई चांस ऑफ एटलीस्ट 50% अप मूव इन दिस स्टॉक. बट इट्स अ मंथली व्यू. सो ये Cummins. I think today this stock has moved up quite a bit, right? Yeah, breakout something. Okay. So, what is the story over here? Let me see. See, the story over here is that, see, stock तो bullish है, and I think it will continue to run up. I think it will continue to run up. It can run up little more towards 538. So 538 तक ये stock जा सकता है. That's all I would say. Yeah. See, ये stock में एक अच्छा ट्रेड आएगा after say 10 to 20 days later. Why I am saying is because see, this is the first round. Okay, so this is the say first round of this breakout, which will have targets towards I think 600. So this will be the first round. It will take out all the supplies. Then in second round onwards, you will see a better moves that will unfold. So as of now, I think 540 is the target. Also, I see it trading in this channel, right? So you have the 50% mark of the channel taking resistance, but I think it will succeed and shoot towards 540 odd level, and then in second round it will be a good stock to buy. All the moving averages would have also converged on the upper side, providing cushion. So good stock. If you are holding long, आप इसको होल्ड कर सकते हो. एक चीज ध्यान में रखिए कि नीचे में आखिरी सपोर्ट है 470 का.
नीचे में आखिरी सपोर्ट है 470 का. फाइन. सो रिमेंबर दैट थिंग. रिमेंबर दैट थिंग. ओके. या सो ये था आपका. चलो ठीक है. ओके, नेक्स्ट स्टॉक. लेट अस टेक नेक्स्ट स्टॉक. सन टीवी. सन टीवी. Okay, I will take only five more stocks and then we'll wind up. Tata Steel पे query है. Okay. So Sun TV is our perma pair short stock. So I'm always bearish on this stock. Last support है इस पे around 400 पे. I think it's a complete sell on rise counter. So I will give only short trade. As of now, there is no short trade. 400 is a good support level. Okay, you can see 400 as a good support level. So maybe some technical bounce can come, but overall, you see it's a big head and shoulder pattern distribution is going on, and sooner or later, you know, once this is taken out, complete collapse. So be careful on long side in this stock. I'm expecting new lows to hit on Sun TV in next 6-7 months time frame. Okay, so under 200 I'm expecting. There are other reasons also for so much bearishness. Okay, so that's all on Sun TV. Dr. Reddy I've already explained. Yesterday also I explained Dr. Reddy's. बीपीसीएल एक बार मैं बीपीसीएल और टाटा स्टील ये दो स्टॉक्स जो है इसको मैं एक बार अपडेट करता हूँ. सी डॉक्टर रेड्डी सेम व्यू है यार. 5000 के नीचे जब तक है तब तक बेरिश हूँ मैं. 5000 के ऊपर ही इसमें बुलिश रहूंगा मैं. ओके. सो यस्टरडे आई थिंक मैंने एक एग्रेसिव लॉन्ग ट्रेड करने को आपको बताया था कि नियर 4785 के आसपास एंड स्टॉप लॉस ये 4675 का रहेगा. सो यस्टरडे वाला ही एनालिसिस है, कोई चेंज नहीं है. जस्ट रिफर टू यस्टरडेज वीडियो. सेम एनालिसिस है. टाटा स्टील की तरफ चलते दोस्तों. टाटा स्टील आई थिंक टुडे टाटा स्टील हैज डन वंडर्स. लेट मी सी टाटा स्टील. सो 521 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है. वेरी हैवी सप्लाई इज कमिंग नियर 535. Okay, as you can see 535 is the median line, sorry 546. So overall this stock is going to peak out where this stock is going to peak out mostly near the 550 mark I would say. ठीक है. सो क्या आप शॉर्ट करेंगे? नहीं, शॉर्ट भी करना है, बस चुपचाप बैठे रहना है. जब इसमें एक रिवर्सल होगा तब हम इसको शॉर्ट करेंगे. सो इट हैज ब्रोकन आउट ऑफ द 500 रेजिस्टेंस विद अ गैप. सो let it travel more, and you see on Tata Steel it follows a 44-day cycle. Okay, so you see 44-day का इसका एक cycle होता है. So I've already marked 11th December. So between now and 11th December this should peak out. So I have a time window. Price wise I feel 550 is the level. So this is how I anticipate. ठीक है, this is how I'm anticipating. So if I see that this stock is not crossing this band of 550 by 11th of December, or before itself, if I see some candlestick reversals coming from this price and time band, then I will look to short. तब तक कोई भी शॉर्ट नहीं करना है. सो 550 का टारगेट है. आई थिंक टारगेट डेफिनेटली ये करेगा. एंड देन लेट अस सी इफ वी कैन गेट अ रिवर्सल ऑन टाटा स्टील. चलिए, सो ये हो गया टाटा स्टील पे अपडेट. अदानी ग्रीन की तरफ चलते हैं. देखो अदानी ग्रीन ने तो हरियाली फैला दी है. सो द स्टॉक हैज रैलीड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. सो इसमें मैं ब्रेक कैसे लगाऊं? मेरा सिंपल टेक्निक है होता है इन स्टॉक्स में, जब तक प्रीवियस डे बॉटम सिक्योर्ड है आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं. सो नाउ फॉर टुमारो today's bottom is important. So till previous day lows are holding, you can remain long. याद रखिए, these are all operator driven stocks. Try to exit sooner or later. Havels last stock for the day. Havels BPCL में लूंगा. BPCL एक बार चेक करता हूँ मैं. Havels के बाद सी Havels में
860 is the last target. 866 is the last target. I think tomorrow it should break out, definitely break out करेगा, and 866 is the target. यहाँ पे 866 के आसपास यहाँ पे आप लॉन्ग में निकल जाइए, ठीक है, क्योंकि आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू एग्जिट लॉन्ग. दोस्तों, दिस वाज आवर बेस्ट स्टॉक पिक ड्यूरिंग कोविड क्रैश. हमने इसको एग्जैक्ट 440 पे, 440 से 450 के आसपास इसको उठाया था. आई थिंक इट वाज या 450 समथिंग. एंड व्हाट अ रैली, नॉन स्टॉप रैली. चलिए, हेवल्स हो गया. एक बीपीसीएल पेंडिंग है. लेट मी टेक बीपीसीएल एंड देन विल वाइंड अप. बीपीसीएल ओके. सन फार्मा बाकी. सी बीपीसीएल कल जैसा मैंने बताया था, कल या परसों मैंने बताया था कि एक बार ये 425 की तरफ जाएगा एंड एक बार इसमें से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाद में हम देखेंगे. सो बीपीसीएल में आज बहुत ही अच्छी रिवर्सल आई है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है. एज ऑफ नाउ इसमें कोई ट्रेड मैं नहीं दूंगा. लेट अस वेट फॉर कपल ऑफ मोर डेज. ओके. सो बीपीसीएल में अगर आप शॉर्ट हैं तो ट्राई टू बुक आउट नियर 388 एंड लॉन्ग के लिए अभी थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है. सो बीपीसीएल में मैंने आई थिंक कल रात को भी बताया था कि ये अब 420 वाले जोन में आ चुका है. एक बार इससे बाहर निकल जाइए एंड देन लेटर ऑन वी विल सी वेयर टू एंटर फ्रेश फॉर लॉन्ग और फॉर शॉर्ट. ओवरऑल इट्स अ काउंटर वेयर एनी काइंड ऑफ पैनिक सेलिंग विल बी बॉट. तो ये मैं आपको बड़ा व्यू बता दे रहा हूँ कि बीपीसीएल जो है अब बेयर्स के चंगुल से निकल चुका है. अब इट्स अ हैवी ड्यूटी बाय. ठीक है. So I think I have taken all the queries. So with that, let us wind up the session. Thank you so much for watching. Just a last update कि anybody who is interested to join the training, dates दिए हुए हैं. Every detail has been put up. आप WhatsApp करके detail ले सकते हैं and you can register. Before I wind up, one stock was pending, which is Bata India. So let me just take Bata India. एंड देन विल वाइंड अप द वीडियो. बाटा इंडिया एक बार मैं ले लेता हूँ. सी 1376 पे स्टॉक चल रहा है. चार्ट्स क्लियर नहीं है एज सच, बट आई थिंक ब्रेकआउट करेगा बिकॉज एवरीबडी इज ब्रेकिंग आउट. सो ये भी ब्रेकआउट करेगा. सो अपसाइड में 1420 should be tested. Overall, I do not like this chart. That's all what I would say. Why I do not like this chart? Simple reason देखिए ये है कि चार्ट पे स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेवल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है. सो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न, सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक शुड बी देयर. नाउ दिस स्टॉक इफ यू सी, स्ट्रक्चर कहाँ था? इसमें स्ट्रक्चर था. दिस वाज अ स्ट्रक्चर. देयर आफ्टर it is noise. Okay, it is absolutely random chaos है, इसमें कुछ है ही नहीं. So that is why such type of stocks should be ignored. Okay, such type of stock should be ignored because right now investors are not clear. Maybe investors are buying, maybe they are selling, god knows what they are doing. The only thing that I can see is this swing uh, is dominating. So ये जो लेंथ थी इसकी 1200 से लेके 1450 का, ये 200 पॉइंट में ये बस ये टाइम पास कर रहा है. सो इफ एनी ब्रेकआउट कम्स विच विल कम, देन एक्सपेक्ट करिए कि 1450 मैक्सिमम ये जाएगा. दैट्स इट. ट्राई टू एग्जिट दिस स्टॉक. इट्स नॉट अ गुड स्टॉक एट द मोमेंट. सो दैट्स ऑल. ठीक है. So that's all, guys. Thank you so much for watching. Take care. Tomorrow and day after tomorrow will be big day for Nifty and Bank Nifty traders. Be careful. And many stocks which I had suggested, they have moved up. SBI मैंने कहा था 220 से 240. So SBI कंप्लीट हो चुका है. कोटक बैंक मैंने उस दिन 1720 पे बाय करने बोला था फॉर वे हायर टारगेट्स. सो दैट गॉट कंप्लीटेड. ओके. किसी ने भी सन फार्मा पूछ लिया तो मैं एक बार जल्द से जल्द बता देता हूँ. सन फार्मा, सो मेनी स्टॉक्स हैव वर्कड, सो मेनी स्टॉक्स. ओके. सन फार्मा देखिए 518 की क्लोजिंग है. ओके. इस स्टॉक को अभी कुछ मत करिए. सो नो ट्रेड एज ऑफ नाउ. नो ट्रेड. बहुत हैवी सप्लाई है. प्लस ये स्टॉक एज ऑफ नाउ आई थिंक आई एम नॉट कंफर्टेबल. ओके.
बिकॉज अगर आप इसमें कोई भी बाय साइड में ट्रेड करते हो, आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है, सो इट्स बेटर टू अवॉइड। अगर आप अभी लॉन्ग है, इफ यू ऑलरेडी हैव अ लॉन्ग, देन टुमारो आप इसमें 510 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, एंड अपसाइड अगर आपको 530 का मिलता है तो आप बुक कर लीजिए। दैट्स ऑल आई वुड से एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।